नमस्ते बिटिया। सदा खुश रहो बिटिया। माई सेल्फ डॉक्टर प्रहलाद सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ द्रव्यगुण, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद, जयवती विद्यापीठ, ह्यूमन इंस्टीट्यूट जयपुर, राजस्थान। टुडे वी डिस्कस अबाउट त्वक। त्वक बॉटनिकल नेम इसका है सिनोमम जैलिनिका। आपको ये याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिनोमम जैलिनिका, फैमिली है इसकी लॉरेसी। ठीक है, लॉरेसी फैमिली, सिनोमम जैलिनिका, ये दोनों नाम आपको याद करने हैं। कर्पूर फुल बोलते हैं इसको, कर्पूर फुल। गण सुश्रुत ने एलादी गण के अंदर रखा है। सुश्रुत ने इसको किसमें रखा है? एलादी गण के अंदर। हिंदी में अपन इसको क्या कहते हैं? दालचीनी। हिंदी में हम लोग इसे दालचीनी के नाम से जानते हैं। द सिनोनिम्स एंड इट्स मीनिंग। फर्स्ट, त्वक। त्वक, द यूजफुल पार्ट इज बार्क। ठीक है, त्वक हम क्यों कहते हैं? तो इसका यूजफुल पार्ट क्या है? बार्क। ठीक है, स्वादी, दारूसिका, त्वक स्वादी। द बार्क इज स्वीट इन टेस्ट, so it is called त्वक स्वादी। और दारूसिका या त्वक स्वादी या स्वादी। त्वनुत्वक, the bark of the stem is useful part, so it is called त्वनुत्वक। उत्कटम, the bark is aromatic, so it is called उत्कटम। उत्कटम क्यों बोलते हैं? The bark is aromatic, so it is called उत्कटम। चर्म नाम, त्वक इज द नेम ऑफ द स्किन और बार्क। ठीक है, इसका नाम क्या रख दिया गया? चर्म नाम। लाटप पर्णनम, mostly it grows in Latadesh, Western Bengal, so it is called Lat Parnanam. One Priyam, growing wild in forest. Growing wild in forest, so it is called One Priyam. Same Halam, common in Simhal, Sri Lanka, so it is called Same Halam. Bhrangam, having aromatic smell, so it is called Bhrangam. Vahagandham, the aroma is intense, so it is called Vahagandham. Mukh Shodhanam, it is mouth refreshing, so it is called Mukh Shodhanam. Good Twak, the bark is sweet like jaggery. The bark is sweet like jaggery, so it is called Good Twak. Swarna Bhumikam, it grows in fertile land. It grows in fertile land, so it is called Swarna Bhumikam. Main features, it is common in Latades, East Bengal, Sri Lanka and Southeast Asia. The leaves are leathery, the bark is sweet, pungent and highly aromatic. The bark is sweet, pungent and highly aromatic. Bhed varieties. According to place from where it is obtained, there are three varieties. First is Chini, China and Singapore. Second is Simhali, Sri Lanka, and third is Bhartiya. According to place from it is obtained, there are three varieties: Chini, Samhali, or Bhartiya Indian. Habitat Utpatti Sthan, cultivated on the Western Ghat and adjoining hill, and also in Sri Lanka, Malaysia, Myanmar, and other southeastern countries. Bark is collected in April, July, and October, December. Habit Swarup, a moderate-sized evergreen tree. Bark rather thick, smooth, pale, twigs often compressed, young parts glabrous except the buds which are finally silky, leaves opposite or subopposite, rarely alternate, hard and coriaceous, 7.5 to 20 by 3.8 to 7.5 centimeter. Ovate or ovate lanceolate, subaquate or shortly acuminate, glabrous and shining above, slightly paler beneath, base acuate and rounded. Main nerve 3 to 5 from the base or nearly so. Strong with fine reticulate venation between petioles 1.3 to 2 cm, long flattered above. Flowers numerous in silky pubescent, panicles usually larger than the leaves. Pedicels long, carrier 5.6 mm long, tube 2.5 mm long, fragments pubescent on both sides, oblong or somewhat ovate.
usually obtuse, fruit 1.3 to 1.7 centimeter long, oblong or ovate, oblong, minutely apiculate, dry or slightly fleshy, dark purple, surrounded by the enlarged campanulate perianth, which is 8 mm in diameter. उपयुक्त अंग or part used: त्वक, पत्र and tail. Three parts are used as a medicine purpose: त्वक, पत्र and tail. Description of the part: single, double or closely packed. Compound quills of varying length up to 2.5 centimeter in diameter and 0.5 mm to 1 mm in thickness. Outer surface deep fawn or yellowish brown in color, with shining wavy lines running longitudinally and occasional scars and holes. Inner surface dark brown with faint straight striations, fracture short and splintery. Order characteristics: taste aromatic and miscellaneous. Then properties of twerk: रस कटु तिक्त मधुर. रस is कटु तिक्त and मधुर. विपाक उष्ण सॉरी वीर्य उष्ण. गुण लघु रुक्ष and तीक्ष्ण. गुण लघु रुक्ष and तीक्ष्ण. विपाक is कटु. दोष कर्मता कफवात शामक. Now the pharmacological actions: sugandhi, that is sugandhi, and शुक्रजनक and balya, वर्ण, मुख शोषग्न, तृष्णा निग्रहण and वातानुलोमन, ग्राही, दीपन, पाचन, उत्तेजक, स्तंभन, शोणित स्थापन. शोणित स्थापन मीन्स कहीं से ब्लीडिंग हो रही हो तो उसको रोकने वाला. ठीक है. आक्षोभर, आक्षेपहर या आक्षोभर एंड कृमिघ्न, मतलब कृमियों का नाश करना. आमिक उपयोग कैसे यूज करेंगे, थेरेपेटिक यूजेज इसके: फॉर मुक्षोष त्वक, मुस्ता, एला एंड धान्यक इज यूज्ड, और मुस्तक आम्ल की त्वक आर यूज्ड, और त्वक दारुहृद्र बार्क और यवानी इज यूज्ड, और तेजोवती पिपली और त्वक यूज्ड, और यवानी चिंतिटक इज यूज्ड. In this condition, it may be used as gandush or this causes mouth refreshing. ठीक है. अब मुख शोष हो रहा है तो गंडूस मतलब मुंह में भर के इनका, इनको जैसे कुछ कंटेंट्स हैं जैसे मुस्ता है, एला है, धनिया है, उत्तवक है. ठीक है. इनका डिकॉक्शन बना के मुंह में भर के रखना है. ठीक है. तो इससे ये जो मुख शोष वाली कंडीशन है ये ठीक होती है और मुख रिफ्रेशिंग भी होता है. त्वक बीइंग ए दीपन द्रव्य यूजफुल इन आमाशय रोग and Adhaman, Amashashun, Vama, etc. The tail is given with Mishri in Harlas and Vaman. The twat can be kept in mouth or quat may be given. In Atisar, Ambikar, Grahini, etc. Quat is given. In Rajyakshma, the oil is given. In Kashai, Jwaran, it is applied. During Prasuti, it is used with Pipli Mool and Banga for Garbhasya Utteja. It is given with Ashok in Atyartha. Quat is useful in Huffus and Garbhasya Raktasrav. In Shirashur, due to pith, a paste prepared from tawak, patra, and sharkra, pounded with rice, water, should be used as pressed snuff flour, followed by sniffing with grit. In Swarbhang, Kas, Swans, Che, Urashur, Twak Ela Pipli, Twak Shiri, and Sharkra, successively double in quantity, should be powdered and taken with honey and grit. These all are therapeutic uses of त्वक. मात्रा, dose: त्वक चूर्ण 1 to 3 grams, त्वक चूर्ण 1 to 3 grams, तेल 2 to 5 drops, पत्र चूर्ण 500 milligrams to 1 gram. These are the doses of त्वक. और औषधि और फॉर्मुलेशन: सीतोपलादी चूर्ण. ठीक है. सीतोपलादी दया आता है ना, दालचीनी. ठीक है. तो ये इसका कंटेंट है. त्रिजटा चूर्ण
चतुर्जात चूर्ण, त्रिजात और चतुर्जात, and chemical constituents, essential oil, tannin, and mucilage. After that, substitute and adulterations. Stem bark of cinnamon, tamal, known as commerce in Indian Acacia lignia, or tej thal, is sold as a cheap substitute. The material consists of channeled or quilt pieces of hard bark up to 3 mm in thickness. The outer surface is rough, reticulately variegated and reddish-brown in color. The inner surface is leathery, reddish-brown, fractious, splenetary, odor campaceous, taste sweet and pungent. Chinese Cassia, often from Cassia, Chinese Cassia Blume, imported to India via Singapore and Hong Kong, and distinguished by channeled single quills, dark red color, sweet pungent taste is sometimes used as substitute. Bark obtained from wild trees of Chinese Galenicum, Cinnamon Galenicum, is the common adulterant. Is the material has a rough and dark-brown outer surface and subdued aroma. भावप्रकाश निघंटू से about what? त्वक् स्वाधीन तु त्वत्वनुकषस् तथा दारुसिता मता उक्ता दारुसिता स्वाधीन तिक्ता च अनिल तिक्तरस सुरभि शुक्ला बल्या मुक्षोस्त्रशापः. This is all about Twak. So children, today's session is powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapit Women's University, Jaipur, Rajasthan. I hope you all are satisfied with this session. If you have any query, please mention in comment box. Thank you.